Assalamu alaikum. Myself Dr. Ansari Farzana W from Chemistry Department, J.A.T Arts, Science and Commerce College. Now today we shall discuss the next chapter of the Analytical Chemistry, Polarography of TYBSc. Polarography is the branch of voltammetry. Voltammetry is the technique in which the potential is applied to one of the electrode while the current flowing through the electrode is measured. And the name voltammetry itself expresses that it is the current voltage technique. By यहाँ पर क्या बोला है, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो करंट प्रोड्यूस होती है ये मेजर करना, इट इज़ द बेसिस ऑफ पोलैरोग्राफी. That means by application of the potential, current flow through the electrode is measured. It is the basis of polarography analysis. In simple word, you can say that it is a current voltage technique. Principle of polarography. Polarography is macroelectrolysis is carried out with the help of two electrodes. These two electrodes are reference electrode and indicator electrode. The electrode is compared. The large surface area electrode is non-polarizable electrode. It generally acts as a anode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. And here in polarography it is defined as the electrode whose surface area is large is called as reference electrode, and this reference electrode is also called as non-polarizable electrode. Whereas the electrode which have the small surface area, it is called as the indicator electrode, or it is also called as polarizable electrode. Indicator electrode आमतौर से हम क्या कहते हैं, the electrode whose potential changes with the course of experiment is called as indicator electrode. In the sense of polarography, the electrode whose surface area is small is called as indicator electrode, and the electrode is also called as polarizable electrode. Reference electrode, large surface area, non-polarizable. Indicator electrode, the small surface area and polarizable. Here generally the indicator electrode used in polarography are dropping mercury electrode. Dropping mercury electrode is also called as, is abbreviated as DME. DME. It is a simple figure of the DME, dropping mercury electrode. It consists of a mercury reservoir in which mercury is filled. In that a connecting wire is dipped, and then below the mercury reservoir, a rubber with the help of rubber septum, a fine capillary is attached, and that capillary is called as the glass capillary tube. And here the indicator electrode acts as a negative electrode, whereas reference electrode acts as a positive electrode. Advantages of dropping mercury electrode. The surface of mercury drop is smooth, continuously renewed, and surface area is reproducible, and this eliminates the passivity and poisoning effect. Mercury form amalgam with many metals. Mercury has high hydrogen over voltage. It can be used over a range of 0.4 to -2 volt with reference to the saturated calomel electrode. Generally, saturated calomel electrode is used as a reference electrode here. The surface of the mercury drop can be calculated from the weight of mercury drop, but along with it have some disadvantages. The area of the microelectrode change as the size of drop change. Mercury may be easily oxidized, and thus dropping mercury electrode can be used only for analysis of reducible or very easily oxidizable substances. Mercury is costly and poisonous. Dropping mercury electrode is used for the capillary may easily plugged.
This electrode generates some small current like residual and migration current, which cause error in the current measurement. This is the simple diagram for polarograph. Here it consists of whether it is in the form of H shape, दो फॉर्म है यहाँ पर, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जो है उस दोनों में है यूज़ हुआ है, डिफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और ये दो टाइप के पोलरोग्राफिक सेल है, एक एच शेप है और एक सिंपल शेप है. जो H shape है, it consists of the two arms. In standard calomel electrode, here it is filled with saturated KCl. Its base is filled with mercury and mercurous amalgam, and here one inlet for nitrogen and one outlet for oxygen, and above that dropping mercury electrode is connected. And here it is filled with the help of the solution which is under study. Here positive electrode is standard calomel electrode, reference electrode acts as a positive electrode, and dropping mercury electrode acts as a negative electrode. And here this is the simple, the base of this sample cell is filled with the mercury, and the right hand side is connected with the mercury pool, and it is acts as a positive electrode, and here above that the solution which is under study is filled, and the dropping mercury electrode is connected at the top. These are the two type of polarography. यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में हर टाइम एक ड्रॉप गिरता है और उसकी सरफेस जो है वो उस पर ऑक्सीडेशन रिड्यूसिबल स्पेसिस जो है वहाँ पर रिड्यूस होती है. पोलरोग्राफ, this is also one of the schematic diagram of the polarograph. Polarography consists of a battery, potentiometer, shunt, galvanometer, and the graph which is obtained by plotting the current against potential. Current against potential is called as polarogram, or it is also called as polarographic wave. Polarographic wave, here it is consist of the three part. The A to B is called as residual current. B से C जो जाता है वो कहलाता है यहाँ पर डिफ्यूजन करंट, और C से D जो है वो लिमिटिंग करंट, और B से C का जो हाफ पार्ट है वहाँ पर हाफ पोटेंशियल वेव कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिडक्शन होता है मेटल का वो हाफ होता है. इट इज़ कॉल्ड एज हाफ वेव पोटेंशियल. अब रेसिडुअल करंट है जो है वो किसकी वजह से आता है, रेसिडुअल करंट ड्यू टू दी रेसिड्यू. रेसिडुअल करंट इज ऑब्टेन ड्यू टू दी रेसिड्यू ऑफ दी सॉल्यूशन, वेयर एज यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन करंट है, बी से सी डिफ्यूजन करंट है, और लिमिटिंग करंट है. यहाँ पर जितना भी रिड्यूसेबल स्पेसिस थी वो रिड्यूस हो गई, उसका रिडक्शन हो गया, और लिमिटिंग करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी सी से डी. ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ पोलरोग्राफी. Polarography have the various application for detection of metal ion, detection of organic compound, detection of trace amount of electroactive substances, and it is generally applicable for qualitative as well as for quantitative analysis. Quantitative analysis में unknown concentration can be determined with the help of echoic equation. Echoic equation, the equation, this equation is called as echoic equation. ID is equal to 607 n d raised to 1 half C unknown m raised to 2 by 3 t raised to 1 by 6. ID is the diffusion current. D is the diffusion coefficient, and C is the concentration, and m is the mass of mercury, T is the time of falling the mercury drop. अब यहाँ पर क्या करेंगे,
कि आफ्टर टेकिंग द पोलरोग्राफिक एनालिसिस प्लॉट द ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज। पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का पोलरोग्राफिक एनालिसिस करेंगे, फिर अननोन सॉल्यूशन का पोलरोग्राफिक एनालिसिस करेंगे। जिसमें अमाउंट मालूम करना है हमें मेटल का, उसको अननोन सॉल्यूशन कहेंगे। जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। अब इस तरह से दो टाइप की पोलरोग्राफिक वेव हमें मिलेंगी, रेसिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लिमिटिंग करंट। फिर हम इल्कोइक इक्वेशन में उसे रखेंगे। इल्कोइक इक्वेशन जो है, सपोज कर लो अननोन के लिए क्या है, ID ऑफ अननोन इज इक्वल टू 607 n d⁻1/2 c अननोन m⁻2/3 t⁻1/6। Similarly, for ID of standard is equal to 607 n d⁻1/2 c standard m⁻2/3 t⁻1/6. Rearranging this equation, then dividing these two equation, first equation divided by second equation. D or n are similar, diffusion constant are same, diffusion coefficient are same, number of the space is number of the ion. आयन का जो चार्ज है वो भी सेम रहेगा। जैसे कॉपर का अमाउंट मालूम करना है तो स्टैंडर्ड में भी कॉपर है, अननोन में भी कॉपर है, दोनों में n इज इक्वल टू 2 रहेगा, इसलिए n भी कैंसिल हो जाएगा। 607 607 ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, m भी सेम रहेगा क्योंकि दोनों सॉल्यूशन सेम है। t भी जो है सेम ड्रॉप टाइम रखेंगे, इसलिए t भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, ID अपॉन ID स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ID ऑफ द अननोन अपॉन ID ऑफ द standard solution. Now rearranging, taking the standard concentration from this side to this side, so this equation becomes this one. C unknown is equal to ID of unknown upon ID of standard into C standard. Simultaneous determination of the cation from their mixture. Simultaneously you can determine which cations are present in the solution. पहले आपको सैंपल दिया जाएगा, सैंपल में 3 से 4 ज़्यादा केटायन होंगे। हम असेंबली अरेंज करेंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे पोटेंशियल और उसका करंट जो डेवलप हो रहा है वो मेज़र करेंगे। फिर प्लॉट करेंगे ग्राफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज, तो इस तरह से ग्राफ मिलेगी। See here, this type of the graph is obtained. और उसका ID हमें मेज़र करना है और ID मेज़र करके स्टैंडर्ड चार्ट से हमें कंपेयर करना है। जिससे भी स्टैंडर्ड चार्ट से हमें ID कंपेयर हो जाएगा वो केटायन जो रहेगा हमारा वो रहेगा। जैसे सपोज कर लो पहला ID जो है वो PB से मैच हुआ, मतलब पहला केटायन हमारा PB रहेगा। दूसरा ID है जो ID का वैल्यू जो है वो Zn से मैच हुआ, इसलिए सेकंड केटायन हमारा Zn रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप डिटरमाइन कर सकते हो एक या एक से ज़्यादा केटायन एट अ single time. Simultaneously you can determine more than 2 ions with the help of polarography analysis. It is one of the qualitative analysis. Determination of dissolved oxygen. Dissolved oxygen in water or aqueous solution is readily reduced as DME. Such solution containing dissolved oxygen show two distinct waves. This type of polarography estimation of oxygen has been widely used in biochemistry for study of respiration of green algae photosynthesis. Thank you for watching.